Now coming to question number 104A, 4.104A, ये भी सिंपल ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, हमारा 104 की तरह। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर रेट को लेकर, ठीक है, बट दैट इज वेरी मैनेजेबल, वेरी वेरी मैनेजेबल। लेट अस गो थ्रू द सम। भाई क्या कह रहा है सम हमसे? a US company wants to set up a manufacturing plant in India which requires an initial outlay of rupees 8 million. कंपनी कहाँ की बेटा? US wants to set up a manufacturing plant in India, ठीक है, ₹8 million रिक्वायरमेंट है, यानी 80 लाख रुपए, 80 lakhs. It is expected to have useful life of 5 years and a salvage value of ₹2 million. The company follows straight line method of depreciation. To support additional level of activity, investment would require one time additional working capital of ₹1 million, यानी 1 million working capital requirement है. Since the cost of production is lower in India, the variable cost of production would be ₹30 per unit. Additional fixed cost per annum is estimated to be 0.5 million, यानी 5 लाख रुपए. The company is projecting its annual sales to 80,000 units at a price of 100 per unit, right? तो 30 rupees चला गया वेरिएबल में, बचा क्या? 70 rupees for the purpose of contribution. Applicable tax rate to the company is 34% and its cost of capital is 8%, right? Inflation rate, अब suddenly inflation picture में आ गया. In US and in India are expected to be 8% and 9% respectively. The current exchange rate is ₹72 per dollar, right? The moment I first read this up, I just overthought a little, जो मेरी हैबिट है. अगर हम यहाँ देखो, since the cost of production is lower in India, the variable cost would be 30 per unit. Additional fixed cost ये इतना रहेगा, ठीक है. The company is projecting its annual sales to be this at 100 rupees. So for a moment you feel that should we adjust inflation to this or not, right? So the institute has kept it very simple. They have not adjusted inflation to these numbers. The inflation is just for the purpose of, हम लोग जो आगे के सम करेंगे, राइट, वहां हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करना, और सम में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि इन्फ्लेशन हो तो आपको वहां लिखा जाएगा कि भाई इन्फ्लेशन से ये नंबर्स एडजस्ट किए जाएंगे, राइट. द वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हैज टू बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, देन वी वुड डू इट, राइट. ठीक है, ये मेरी हैबिट है, आई जस्ट गो ओवर द बोर्ड, और मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी पूरा सॉल्व कर दिया था पहले ना. And it's not that difficult, it's simple. Just inflation is to be used for the purpose of purchasing power parity theory to figure out the foreign exchange rates for next 5 years, assuming that all the profit will be repatriated every year इसको US parent को, and there will be no withholding taxes. Estimate the NPV of the proposed project in India and evaluate its feasibility at 8%. कितना क्लियर सम दिया है. मुझे भी बहुत बार सोच में पड़ जाता हूँ, why I tend to overthink so much. स्ट्रेट सम है, सीधा स्ट्रेट है, कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए पहले इसको पार्ट बाय पार्ट पहले हम लोग को फिगर आउट करना पड़ेगा. गिवन इन INR टर्म्स कितना है? इज 80 लाख. ठीक, इन्वेस्टमेंट इन INR 80 लाख. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 लाख.
So to commence 90 lakh rupees चाहिए अपन को. The US company should have it. ठीक है. Current exchange rate क्या है? 72 for US dollar. Total fund requirement. $1,25,000. Right? USD टर्म्स. तो इतना पैसा इन लोगों को लाना पड़ेगा. किनको भाई? यूएस पेरेंट कंपनी को. ठीक. Computation of depreciation. स्ट्रेट लाइन एप्लीकेबल है. बहुत आसान. 80 लाख इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 5. 12 लाख. ठीक. अब कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो. बहुत ही सिंपल ये भी. बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से कुछ एडजस्ट नहीं करना है. बिकॉज दे हैव नॉट कैटेगरिकली स्टेटेड इट ओवर हियर. And that is how the suggested answer is also being placed. We shouldn't overdo and adjust inflation. जो भी निकलेगा वो कैश फ्लो हर ईयर रिपीट होगा. सीधी बात है. इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियसली नंबर सब चेंज होंगे. WDV भी नहीं है, सो डेप्री भी फ्लैट है. सो ऑल द नंबर्स वुड बी द सेम. तो हम लोग एक सिंगल कैश फ्लो निकालेंगे तो जो ट्रैकर फॉर 5 years. Again really simple, isn't it? अमाउंट किस टर्म्स में होता है? रुपीज में. कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 70 रुपीज. 30 इज आर वेरिएबल कॉस्ट. 100 रुपीज में से वो चला गया तो 30 रुपीज चले गए तो 70 बचा. ठीक है. कितने यूनिट वी आर एक्सपेक्टिंग? 80,000 to be sold each year. इतना है 56 लाख. अच्छा खासा नंबर है ये. because our investment is not huge. Let's fixed cost इतना 5 लाख. कितना आया? 51 लाख. ये क्या है?
Profit before depreciation and tax less depreciation कितना है महाराज? क्या हमारा पीबीटी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34%, 13,26,000. No rocket science calculations over here. सीधा सीधा सब कुछ. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? डेप्री एड बैक हो जाएगा ना, फाइनेंस है ये, जस्ट इमोशनल कॉस्ट. फ्री कैश फ्लो कितना आएगा? इट विल रेकर एवरी ईयर फॉर 5 years. There's no change in units, there's no change in cost, there's no advertisement cost coming in between or additional cost coming in between. Straight forward है कैलकुलेशन. ये रेकर होगा 5 years के लिए, ठीक है. तो हमारा कैश फ्लो मिल गया अपन को. Computation of FER as per purchasing power parity theory. Inflation है तो purchasing power parity theory would be applicable. Inflation इंडिया में कितना है? 9%. US 8%. So obviously the currency with greater inflation will depreciate and the currency with lesser inflation will appreciate. Obviously we'll figure out that $1 is able to buy more and greater number of rupees as time goes by. Current after 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5. Current, or I'll write it today, or you can write spot. 72. ठीक है. तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी हम लोग सीधा सीधा अप्लाई करेंगे. कैसे होगा बेटा? 72 है इनटू इंडियन इन्फ्लेशन रेट 1 प्लस इंडियन इन्फ्लेशन डिवाइड बाय 1 प्लस फॉरेन इन्फ्लेशन. 72.66667 करके जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे. Continuing in that vein, 73.34, 74.02, 74.70, 75.40. डन. कि हम अपन को एक्सचेंज रेट मिल गया.
Amount of cash flows to be repatriated each year. Amount in INR. कितना भाई था? 37,74,000. यहाँ अपन को ईयरली कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज एवरी ईयर द एक्सचेंज रेट बेटा इज डिफरेंट. हर साल का अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. लास्ट वाला आ जाएगा आपका 30 लाख. 2 बार 5 ईयर. यस. 30 लाख किस बात का? सैल्वेज वैल्यू है असेट की. इनिशियल असेट में अपन ने जो इन्वेस्ट किया था 80 लाख, वी आर गेटिंग अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ हाउ मच? 2 मिलियन, व्हिच इज 20 लाख. एंड वर्किंग कैपिटल जो हमने इंटर में भी सीखा है, फाइनल में भी सीखा है, दैट गेट्स रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ. ठीक है. तो वो कितना है भाई? 1 मिलियन, दैट इज 30 लाख. ठीक है. तो टोटल हो गया 30 लाख. और सैल्वेज वैल्यू एफईआर बेटा क्या क्या है? $72.67, 73.34, 74.02, 74.70, 75.40. ये भी आ जाएगा 75.4. राइट. बोथ अकरिंग एट द एंड ऑफ 5th ईयर. डन. एस्ट्रो इन यूएसडी 51,933.40, 51,458. See, we are noticing a slight drop. Why? Because the USD is hardening, is gaining more ground. .02, 50,000. $522. देख रहे हो ना, यूएसडी में कैश फ्लो घटते जा रहा है.
798 है तो 80 बना देते हैं, डन। बट इससे एनपीवी नहीं निकलेगा बिकॉज ये ईयरली वैल्यूज है, यू हैव टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट वैल्यू इन ऑर्डर टू गेट अ प्रिसाइज आंसर। सो हमारा अब आ रहा है फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। Remove capital budgeting from the new syllabus right in 2018, लेकिन भाई कहीं ना कहीं है ही is there years of period, particulars, present value factor, cash flow and present value of cash flow. You don't need to calculate the present value factors, it's already given in the sum. Investment आज होगा, value of $1 is $1, सीधी बात है। Cash flow कितना, $1,25,000, that was required investment plus working capital. We have to calculate for the US parent, सब amount dollars में रहेंगे, repat हो रहा है हर साल, उस हिसाब से everything has been converted to dollars. Operational cash flow जो business से आ रहा है 51,933.40, और अपन को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर समझनी ही है 3 डेसिमल तक। Just make the list first. और 926.857 784 इन्होंने लिखा है 0.784, मेरे हिसाब से आ रहा है 0.794। पॉइंट 735, 0.681, ठीक है। लीव द करेक्ट नंबर्स। $51,933.40, फिर क्या नंबर है 51,458.96, 58.96, बाद में 59,86.22, 55,22.09, 50,53.05 एंड ऐड कर देते हैं 89,840.85, प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा 48,090 एंड 33।
चलिए कार्य समाप्त। कितना है महाराज? On an investment of $1,25,000, the NPV is coming to 1,05,989.08. Huge. जब कैश फ्लो का फिगर देखा 37,74,000, तभी मैंने बोला था कि हमारा इन्वेस्टमेंट INR टर्म्स में सिर्फ 80 लाख है, 90 लाख में 110 लाख तो रिकूप हो जाएगा. दैट इज अ ह्यूज कैश फ्लो. इवन दो द यूएस डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, अगर आप देखो तो कैश फ्लो की वजह से कंप्रेस हो रहा है, बट स्टिल द कैश फ्लो इज सो ह्यूज that on an investment of $1,25,000, still there is an NPV, a positive NPV of 1,05,989.08. Hence the project should be undertaken. नोट ऑफ कॉशन कि भाई इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करना है, हर साल वेरिएबल कॉस्ट प्राइस उसके साथ स्पेसिफाई नहीं किया तब तक मत करना. ठीक है, तो एक बार रिकैप कर देते हैं. देयर इज अ यूएस कंपनी which has to which wants to put a manufacturing plant in India, right, and their cost is 80 lakh rupees. The salvage value of such investment is 20 lakh rupees. 10 lakh rupees is the working capital, right? 30 rupees per unit is the variable cost. Additional fixed cost, that is 5 lakh rupees, is the estimation on annual basis, per annum basis, right? And they are projecting a sales of 80,000 units at 100 rupee each that they are planning to sell, right? That is 80 lakh का सेल तो यही दिख रहा है. ठीक है, और ऐसा कोई खास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, डेप्री नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? डेप्रीसिएशन अपन ने कंप्यूट किया था कितना, 12 लाख रुपीस. ठीक है, बाद में हमने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया एट एन FER ऑफ 72. रिकलेक्ट 72 है ना महाराज, करंट FER. तो $1,25,000 का इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख का depreciation है INR में. We did the computation, cash flows contribution, that's 70 rupees into 80,000, 56 lakh, less fixed cost 5 lakh, 51 lakh is our profit before depreciation. Tax less depreciation 12 lakh, profit before tax 39 lakh, tax 13 lakh 26,000, PAT 25 lakh 74,000. We add back depreciation, we get a cash flow of 37 lakh 74,000, right? बाद में we do the computation of FER. ये हमने computation of FER किया यहाँ 5 साल के लिए using the purchasing power parity theory. Formula very very simple, current foreign exchange rate into 1 plus R, right? किसका, रुपी का, divide by 1 plus R of the foreign currency, that's US dollar in our case, 1.08. We got our respective FERs. We notice that the dollar is appreciating, right? So when this US based company repacks, gets the cash flow back, obviously the dollar is strengthened, so they have to shell out more money in order to buy each dollar. That's why we notice that the quantum of dollars being repacked is lesser and lesser year on year, right? और बाद में हमने 5 साल का US डॉलर का रीपैक निकाला. लास्ट 2 यहाँ बन रहे हैं, वो ध्यान रखने वाली बात है, राइट? अरे महाराज क्यों? क्योंकि ये 30 लाख क्या है हमारा, रिकूपमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है एंड सैलवेज वैल्यू है, राइट? एंड वी कन्वर्ट ऑल ऑफ देम,
यहाँ भी FER सेम रहेगा बिकॉज दो 5th ईयर का FER है, तो यहाँ थोड़ा केयरफुल, राइट। बाद में कंप्यूटेशन ऑफ NPV निकालेंगे तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद वर्किंग कैपिटल, यहाँ 5th ईयर में मैंने क्या किया, ऑपरेशनल कैश फ्लो के साथ साथ आई हैव आल्सो अकाउंटेड फॉर, ऐसे लिख सकते हैं तो कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कैश फ्लो सैलवेज वैल्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही लिख देते हैं ना भाई, जगह नहीं है। WC रिक्रूटमेंट सब कुछ इसके अंदर अपन ने डाल दिया है, and then we bring it to present value at 8%, the rate which is required rate of return for the US company. We see a massive positive NPV of 1,05,989.08 on an investment of nearly $1,25,000. Should the investment be undertaken 100%? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए